ट्विटर भी बहुत बातें कर रहा है आजकल और बहुत सारी चीजें बात हो रही है, द थिंग अबाउट एआई रिप्लेसिंग जॉब्स। हाँ। और और एआई में आया भी था कि बहुत सारी ऐसी जो एक इमेज वायरल हुई थी, आई डोंट नो इफ इट वाज ट्रू और नॉट, बट 20 कुछ जॉब्स वो रिप्लेस कर देगा एआई इजीली इन नेक्स्ट 5-10 years। हम्म। उसमें कई सारी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग जॉब भी थी, जैसे कॉपी राइटिंग थी, और 2-3 ऐसा था। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक एआई एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा? एंड हाँ, एक तो ये क्वेश्चन है। एंड सेकेंड थिंग अबाउट दिस थिंग कि रिप्लेस लोगों को कर देगा, सो डू यू थिंक इट विल रिप्लेस पीपल? सी आई थिंक इसमें ना आई एम इन्फ्लुएंस, आप देखेंगे जब जब मैं कोई बात करता हूँ ना, आई ऑलवेज रेफर टू व्हाट आई सॉ हाँ। अदर्स। तो मेरा सारा जो ज्ञान है वो सेकेंडरी है। मेरा भी। I've learned from people. So I was listening to this podcast by Naval Ravikant, and one of his core hypotheses that I think made an impression on me and that I agree with is that he says that human beings are meant to do creative jobs. Everything else will be overtaken by machines in a longish period of time, Right. and that has been happening from the time human beings invented wheel. Hmm. Slowly but steadily, on all non-value adding jobs are outsourced to machines. That there is nothing new about this. Yeah, we've just got a new topic and now we have a social media platform to talk about it. बट आप सोचिए कि ये तो एआई आया है, जिस टाइम कंप्यूटर्स आए थे उस टाइम क्या हल्ला मचता अगर हमारे पास ट्विटर होता तो। Hmm. या कंप्यूटर्स पॉसिबली वाज अ सिग्निफिकेंटली बिगर डिसरप्शन एज कंपेयर टू एआई इफ यू आस्क मी। या तो so therefore I think this has been happening over a period of time, longish period of time, and therefore humanity has been pushed to find more value adding jobs. Right. I think that's the right direction, number one. Yeah, therefore that is where we should push ourselves, very simplistically said. Number two, मेरे को ऐसा भी लगता है कि ऑन ऑल नॉन वैल्यू एडिंग, जैसे आपने बोला कॉपी राइटिंग, ना कॉपी राइटिंग इज नॉट नॉन वैल्यू एडिंग। या एंड कॉपी राइटिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एआई माइट हेल्प कॉपी राइटर्स कि एक बेसिक कॉपी लिख ली, बट द कैप्चरिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस, capturing of the essence, understanding the cultural nuances is something that a copywriter does very well. Yeah, I hardly think that कल को एआई को आप बोलोगे एशियन पेंट्स के लिए ऐड लिख दो और वो लिख देगा कि हर घर कुछ कहता है के अंदर इसमें कौन रहता है, राइट? तो वो एक जो आपकी नुआंसिंग है राइटिंग की वो नहीं आएगी। हाँ। बट हाँ, आप एक बेसिक अपने एक आर्टिकल लिखना है या एक पीआर का ब्रीफ लिखना, पीआर का रिलीज लिखना है, वो लिख देगा। Hmm. which I think therefore we should slowly but steadily realize that a lot of these things are non-value adding, and that is how they are treated today also. Yeah, Hmm. Right. so that's my first belief. दूसरा मुझे लगता है कि like any other industry, AI will be used in marketing and advertising to try and automate almost everything which possibly does is repeatable and therefore can be reviewed and improved by human intervention. Hmm. तो वो उसका एप्लीकेशन आएगा, राइट? A lot of decision making which requires us to go through layers of data and then compiling data at one place, then comprehending data, then mulling over it and thinking and then making higher order decisions. At least compilation of data and some amount of visualization should get done via AI, and our job should only be about mulling over it and taking higher order decisions, Right. right? So I think some of those things which are possible are things that AI should overtake for sure. Hmm. Yeah, but over a period of time, we should push ourselves to do value added jobs. The only tricky part here, Utsav, which I don't know who I was discussing this with, is that whenever a technology advances, uh,
people responsible for technology advancement should also be made to realize their responsibility towards societal advancement. If you are replacing a certain number of people who are doing non-value adding jobs there is also a responsibility to upskill them. Yeah, and that balance somewhere some industry as well as government has to find. Each business needs to realize that they have a responsibility towards society also. Displacing people and leaving them helpless is going to result into some kind of societal consequences. And that equitable growth, that equitable progress is responsibility of the society. Yeah, that I think we need to ponder over more. अगर if you for example there are audit agencies जहाँ लोग बैठ के सिर्फ bill check करते हैं, even in advertising वगैरह वगैरह. Now a lot of that bill checking hopefully can happen via AI. Honestly, beyond a point there's nothing much there. Now all the people who sit and do that need to be retrained. There is a cost and effort required there. Who is going to do that? Yeah, who is going to pay for it? Yeah. So now that has to be evaluated, that जो भी जहां पे भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को करने में, somehow the AI based application I think should include the cost of retraining in its cost also. You can't have it very very cheap and thereby mass adoption and thereby a certain number of people completely not getting reskilled at all. This is called equitable progress. मेरे को लगता है वो एक चीज है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे. But I have no problem with AI taking over all non-value adding jobs and pushing humanity towards more creative, more value adding endeavors. Right, true. मुझे जो आपने ये चीज बोली इक्विटेबल वाली, आई थिंक दैट्स अ फेयर पॉइंट कि अगर आप रिप्लेस कर रहे हो कोई चीज को तो आप उनको अपस्किल भी करो, बिकॉज अदरवाइज कैपिटलिज्म इज ओके बट उसका फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी बहुत ज्यादा नहीं चलना चाहिए. करेक्ट. राइट. उसका भुगतान भी हम ही करते हैं ना फिर. हाँ, फिर लोगों को ही करना पड़ता है. करेक्ट. ट्रू. और ये चीज तो मैं भी आपके साथ अग्री करता हूँ कि नॉन वैल्यू एडिंग जॉब के ऊपर जो लोग टाइम अपना करते हैं, मुझे अभी भी कोई जॉब्स तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आती है कि जो है इंडिया में अगर वो निकल जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे चले जाते हैं. लाइक आई कैन नेवर अंडरस्टैंड द जॉब ऑफ लिफ्टमैन. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ लिफ्टमैन? देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिफ्टमैन, बट होता है इंडिया में ये सब चीजें कि बहुत सारे लोगों का घर चलता है, तो आई थिंक गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती. राइट. सो वो है ना कि देखो आपके पास जो चीज ज्यादा होती है ना, you throw that at the problems. So if you go to Germany and you have a problem, they will throw an engineering solution at it. हमारे पास लोग ज्यादा हैं, तो जब कोई प्रॉब्लम होती है ऐसा करो 4 लोग और लगा दो. राइट. इफ यू गो टू एयरपोर्ट्स विच इज द प्राइमरी इमेज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ अ कंट्री, वहां पे जितने लोग एम्प्लॉयड हैं, you can't understand what are so many people doing checking boarding passes. Right. Now if you look at this new Digi Yatra जो install हुआ है 3-4 airports, I don't know whether you've experienced it in Delhi, Varanasi, Bangalore and couple of more airports जहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किया है. जो चेक इन इजीली हो जाता है, अपने आप से ही हो जाता है. राइट. बिल्कुल ही. या हाँ, तो हाँ, आप हाँ, आई एक्सपीरियंस्ड इट. हाँ, है ना, तो वो आप बाहर से ही जाइए, आपका कोई आई कार्ड भी नहीं देखेगा. यू डायरेक्टली गो टू योर सिक्योरिटी चेक और वहां पे अपना सामान रखिए. सो आई थिंक दोज आर एडवांसमेंट्स दैट हैव नाउ स्टार्टेड कमिंग when we have realized कि throwing people at everything is not the solution. Not the solution. So all of these will push people up. Now the only thing that we have to do is do it responsibly. Right. True.